So, hey guys, welcome back to our channel. Today is day six of ratio proportion series. We are going to end our proportion and we are going to start variation topic in the ratio and proportion. So there are two questions which are left from proportion. So question number today is question number 56. Yeah, we have done 55 questions. Now the question number 56. Uh, from now on, we are going to do live classes. ये साथ के साथ ही सब कुछ होता है. So this is a new kind of setup, new kind of camera arrangement also done. So from now on, we are going to do live sessions. You can join us on a live video. And tell me कि how's the voice system. I don't know कि कैसी voice आ रही है. It's my first experiment with this. कि कैसी voice आएगी, कितना glow है, कितना chance है. I will check in आज की वीडियो बनाने के बाद. And if there is something I can improve, I will do in tomorrow's video. So question number 56. Find the ratio of the fourth proportion of 254. ये तीन नंबर है, इसका fourth proportion है जो. And the mean proportion between 2.5 and 0.016. हमें इसका मीन प्रोपोर्शन जो आएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन जो आएगा, उसका रेशियो ढूंढना है. पहले इसका फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढते हैं. 2:5:4:x. x will be 5 into 4 by 2 which is equals to 10. फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया x. इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आता है? 2.5 into x into 0.016. x square is equals to x square is equal to 2.5 into 0.016. X will be 25 into 16 and so 5 4 the 20 and 20 is 5 1/5. तो proportion जो अपने को रेशियो ढूंढना है इसका 10 ratio 1/5 multiply 5 in each side 50:1. This is the required ratio. इसके fourth proportion and the mean proportion of this two values. Now we are going to start variation. Let me do some theory part for variation. And this is from my side. I watch my videos, my past videos, and I got to know that usually I do not see in camera mostly because I don't know where is camera right now. So from now on, I will try कि मैं कैमरा में ज़्यादा देखने की कोशिश करूँ. It's a little bit uncomfortable for me, or it is new for me because usually I see in and around right now. So I have to focus on the camera to speak with you directly. So most of the time I will see on my board, and if I have something to interact with you, I will do it in the live camera. So variation. Variation होते हैं भाई. Variation, what the definition? When there is a change in a certain quantity which result in change in another quantity. Variation means if there is a change in one quantity, like एक बढ़ रही है तो दूसरे में change आ रहा है, और ये change दोनों तरीके का होता है. There are three type of variation: direct variation, indirect or inverse, you can say inverse variation, and third is joint variation. This is the important one, joint variation. क्योंकि डायरेक्ट और इनवर्स तो हमने प्रोपोर्शन में कर दिया था कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी and the second one also increase, and if first one got decrease then the second one also decrease, and first quantity increase in inverse, second quantity will decrease, and if it's decreasing then the second quantity will increase. So it is already done in proportion system. In the joint variation, this is the important part. We are going to see a lot of questions from joint variation. So what is joint variation? More than two quantities. These are direct variation and inverse variation. They are related with the two quantities, like A is directly proportional to B and A is inversely proportional to B. When there are three terms, like A is directly proportional to B and B is inversely proportional to C,
These kind of 3 and C is directly proportional to D square. These kind of questions, when you going to see there are more than two quantities, we are going to use joint variation system. So joint variation system, for example, if A is directly proportional to B, directly proportional to B, and A is directly inversely proportional to C. Here the thing is that if we have to where is the third quantity उसको constant जरूर होनी चाहिए. If there are three quantities like A, B, C, if A is directly proportional to B, at that time C must be constant. C is constant. It is provided in the question also. And if A is inversely proportional to C, then the B is constant in this. So A is directly proportional to B by C, and remove the proportions and we have to multiply by the constant. So AC by B is equals to constant. This is a deduced result. It's looking like you have already done. If you are an engineer, you have done this equation a lot of time. But usually we think this is very easy equation. But when we are going to do our ratio and proportion questions, we are going to see if this is the most important equation. We are going to use this equation in a lot of time and in a lot of ways. K means constant. I don't like to write on blackboard, so I just scribble it. So let's start our first question, question number 57. The first question for variation. Let me erase it. Question number 57. This is a very basic question. A value of spherical marble varies directly as the square of radius. Volume, a value is directly proportional to square of the radius. This is given. If a marble of radius, if radius is 2.5 centimeter, then the value is 1,000 rupees, you can say. And what will be the value of marble if the radius is 1.5 centimeter? Now we have to find the value. So see this proportionality sign. Why I am doing this question? I will going to do the next question will also be very basic question. But the thing is that ये दोनों क्वेश्चंस को कराने का मेरा रीजन है, मैं आपको दोनों क्वेश्चंस कराने के बाद बताऊंगा कि क्यों मैंने इस दोनों क्वेश्चंस को कराया. ये काफी इजी है, हमने बहुत बार करे होंगे. हाँ, so V directly proportional to R, V is equals to K into R square. So V by R square is equals to constant, which we can say that V1 by R1 square is equals to V2 by R2 square. So V1 has value of 1000, R1 has a value of 2.5, square has a 2.5, write it twicely. So V2 we have to find, R1, R2 have value 1.5. By calculating this, we can get the value of let me do the calculation. If we cut this values like 2.5, 25, 25, we can cancel it out and we can have the value of V2 as 360 rupees, 360. And there is question number 58. In this question, they are saying y varies inversely to x. Y varies inversely to x. When x is equals to 8, when x is 8, y is equals to 30. What will be the value of x if y is equals to 10? X, what when y is equals to 12? The same thing
Proportionality sign, when we are going to remove this, we have to multiply it with the constant. So yx is equals to constant. So y1 x1 is equals to y2 x2. From here we can find the value of x2 is equals to y1. What's the value of y1? 30 into 8 upon y2 value 12, 2, 3, 10, 20. X2 value is 20. So these are very basic questions. We have already done these kind of questions a lot of times when you are in 12th and when you are in, like I say, in engineering, or maybe if you are a commerce background or if you are arts background, you have done it like plenty of time, maybe from one or two from arts. Commerce or yeah, math or obviously. So why I do these kind of questions? Uh, I I write these questions because I want to explain this thing. This is the most important thing, and this is the most important thing here. What I say कि जो if something is directly proportional to this, then the ratio of the two quantity is constant. And when something is inversely proportional, then the product of two quantity, product means y into x, is equals to constant. This I want to explain. You can learn it, you can understand it, you can reduce it, anything you want to do, but यही चीज मैं आपको important है कि अगर if something is directly proportional to something, then the ratio of that something to the something is constant, and if something is inversely proportional to the something, then something into something is also constant. So these two quantities, these two, what I can say, proof I want to explain you why I do. That's why I do these questions. Let's do question number 59. We have space. Question number 59. X varies directly with y. Now we are going to start the joint variation questions. So from here, this is our first question of joint variation. So if x directly varies with y, x is directly proportional to y as well as z, means x is also directly proportional to z. If x is equals to 2, when y is equals to 3 and z is equals to 5, then what is the value of x? We have to find the value of x when y is equals to 9 and z is equals to 15. From these two terms, we can say x is directly proportional to y into z. These are joint variation things we have already in the theory part. जब दो चीजें एक ही क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन में हो, then we have to multiply these two quantities. If x is directly proportional to y and x is also directly proportional to z, then x is directly proportional to the product of y and z. From here we can reduce y upon x upon y into z is equals to constant. So x1, y1, z1 is equals to x2, y2, z2. From here we can find the value of x2. By putting the value of x2 is 2 by 3 into 5, x2, 9 into 15, 3, 3, 3, 3, 9, and x2 will be 18. This is the very basic question of joint variation. So next we are going to start the advanced level joint variation question, because in the variation topic, joint variation is the most important and most time consuming concept, as I can say. मैंने इसके ऊपर को बहुत क्वेश्चन करे. I have done like plenty of questions from joint variation and I found stuck. Sometimes I know the concept, but questions are very tricky कि मुझे उसका आंसर नहीं समझ आ रहा कि how I do the constant part. The main thing is the constant part. You have to make a thing कि यार इसको मैं constant के ले आऊँ. Once you are get the things in one side and get into equal to the constant, then you can do the whole question. But the first thing is the constant equal. We have to make it. So next question, question number 59 is done. Question number 60. If A is directly proportional to B,
A is directly proportional to B, and B is directly proportional, inversely proportional to C, and C is directly proportional to D square, and D is directly proportional to E square. This is our question. The question is, if A increases, what is the effect on E? Is E will increase or decrease? This is our question. Now, by using the formula of direct variation system, we can find the uh, direct variation. By using the joint variation system, we can say A is directly proportional to B divided by C. C is directly proportional to, हाँ इससे भी कर सकते हैं, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको बिल्कुल बेसिक एलिमेंट टर्म्स में अगर समझाऊं कि ए बढ़ रहा है भाई, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो सी घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी घटेगा तो डी भी घटेगा, डी घटेगा तो भाई ई भी घटेगा. If A increases, E will decrease. It will decrease. Basic question. Not so tricky. Now, question number 61. This is a very good question. First time when I do this question, I made a mistake and I got wrong. So you can do also. अपने आप करके देखो. Then I will explain. X, Y, Z are the three quantities. X, Y, Z are three quantities. X varies inversely with Y. X varies inversely with Y when Z is constant. Here Z is constant. Y varies inversely with Z when X is constant. Here X is constant. If now the condition is Y is equals to 8, Z is equals to 7, then X is 30. This is our first value. Find X. Now find X. If Y is equals to 16 and Z is 21. Firstly, we need to find the values. So what I had done, मैंने जो मिस्टेक करी थी, फर्स्टली ले मैंने थी जो मैंने कैसे करी थी, जो गलती से मैंने क्या करा भाई, x ये है, राइट, y की जगह इसको पुट कर देते हैं, तो इसको मैंने कर दिया था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो है ही है, y की जगह पे इनवर्सली था z, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ऊपर ये है भाई, मैंने बना दी ये वाली इक्वेशन, जबकि ये किया है बिल्कुल गलत. आप तब तक उसको इक्वालिटी में नहीं ला सकते जब तक आप दोनों साइड पे एक ना रखो. जब दोनों साइड पे x कर लो, जब दोनों साइड पे y कर लो. दोनों साइड पे x नहीं कर सकते, we can't do दोनों साइड पे x, but we can do दोनों साइड पे y. So y is inversely proportional to x here, and y is inversely proportional to z. From here we can find कि y is inversely proportional to xz. From here we can get the value, and x, y, z is equals to constant. इससे हमें पता चले. So by this we can say x1, y1, z1 equals to x2, y2, z2. Put the values. Find the value of x2. We have these 5 values, and x2 we have to find. When we find the value of x2, x2 will be 5. I can do, but this is a very basic questions. Question is already done, the calculation left, so it's very basic to run the calculation. So I am not going to do the calculation part. Answer उन्होंने बता दिया कि x2 5 आएगा. Now these are the good. From 61, the questions are now the good quality questions. They are not the basic questions. You can seriously learn these kind of questions. भाई अब मेरे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं. Now, question number 62. For a body starting from rest, the distance traveled is the directly proportional square of time. Distance is directly proportional to the time के square पे.
square of the time from the start. For a body starting from rest, the distance traveled is directly proportional to the square of the time elapsed from the start. If the distance traveled in the first 5 seconds, time they रखा है 5 सेकंड, distance is 50 meter. Find the distance traveled in the 30th second. डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को जिसमें टी की टी है 30th, इसको बनाएगा से 30th टी, मतलब ये जो T5 है ये T0 से लेके T5 की वैल्यू है, हमें 30th सेकंड है जो, मतलब 13वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी उस हिसाब से। अगर वो 5 सेकंड में 50 मीटर जा रही है तो जो 13वां सेकंड होगा 13th जो 30th कह रहा हूँ 13 जो 30th सेकंड होगा 13वां सेकंड होगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हाँ तो 30th सेकंड जो होता है तो जो टी 13 में जितना डिस्टेंस कर रहा होगा और माइनस टी 12 यही तो होता है 13th तो क्या कहते हैं यार टी, मतलब 0 से लेकर 13 सेकंड तक उसमें से 0 से लेकर 12 सेकंड का जो अगर माइनस कर दें तो ही पता लग जाएगा कि जो 13वें सेकंड में उसने 13 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। So now we need to find the value. From here we can say distance is directly proportional to time. So distance upon time square d1 d2 मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको मैंने कैसे करा था। Now I done this question, अगर इसको 50 ले लेंगे और टाइम को ले लेंगे 5 सेकंड equals to t ले लेंगे 13 पूरा उसकी कौन सा वैल्यू हमारे पास है, नो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू 30 सेकंड, तो कहीं ना कहीं हो रहा है दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, याद नहीं आ रहा मैंने कैसे करा था इसको। ये ना है कि यार आई हैव टू चेक माय नोट्स फॉर रिवीजन, दिस इज अ रिवीजन सीरीज सो मैं भी भूल जाता हूँ यार, तो मैंने क्वेश्चन करे हैं, आई डन दिस क्वेश्चन लास्ट वीक आई गेस, I forgot how I done this, but not solely I done this by myself. The YouTube channel I follow, from him he's explaining me and I just wait exit. Now मुझे समझ आ गया था कैसे करते हैं, but now I forgot. Now I have to run my neurons connection बना भाई कैसे करा था उस टाइम पे, नहीं हुआ तो फिर वही देखना पड़ेगा। देखने पड़ेगा। अच्छा ठीक है कैसे करा था समझ, इसको इसकी जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। Proportionality sign we are going to remove then the constant and we have the value of d. D की वैल्यू है d5 अपॉन t5, हमारे पास वैल्यू d5 की वैल्यू 50 and t5 is 5 second and 5 equals to k. K will be 2. Now we have the value of k is equals to 2. What is the use of this k? If we are going to find the value of d13, it is a distance 0 से लेकर 13 तक का माइनस करना पड़ेगा टी बार।
D13 की वैल्यू क्या आती है इससे? डिस्टेंस इज के टी स्क्वायर करता है। के की वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 13 है। D13 इज, सॉरी मैंने बड़ी ही सीधी मिस्टेक करी, टाइम थोड़ी ढूंढना है अपने को, अपने को डिस्टेंस ढूंढनी है कि जो D13 तक जितनी डिस्टेंस होगी और D12 तक अगर उसमें से माइनस करें तो डिस्टेंस जो होगी 13वें सेकंड में 30 सेकंड में वो कितनी होगी वो इससे पता लगेगी। सो D13 हमें ढूंढना है। सो D13 वी कैन फाइंड 2 into 13 square and D12 we can find 2 into 12 square, माइनस इट 2 कॉमन आ जाएगा, 169 माइनस 144, 20 25 is equals to 2 into 25 is equals to 50 मीटर। जो 30th सेकंड होगा 13वें सेकंड में वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये इसका आंसर है। We got answer but we have to take the help. This is not a good thing. But यार कौन सा अपने को सब्जेक्ट आता है, सीधी नहीं यार, धीरे धीरे होके 62 number question is done. Now we are going to do question number 63, 64, 65. Question number 63. X varies directly to the y square plus z square. At y is equals to 2 and z is equal to 3, the value of x is 20. When y is equals to 2, z is equals to 3, x is 26. Now y is equals to 1, z is equals to 5. What is the value of x? Simple है भाई, x1 by y1 z1 square is equals to x2 y2 z2 square। x1 की वैल्यू 26, 2 3 1 5, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बहुत आसान है, x2 की वैल्यू आएगी। सिंपल क्वेश्चन, you can do it by your own self. Now question number 64. Three quantities A, B, C are such that A is kept constant. When A is kept constant, B varies directly to the C. Three quantity है भाई A, B, C. जब A constant होता है तो B directly होती है C के, A constant है यहाँ पे। When C is constant, what's the condition? A is inversely proportional to the B. Initially A at 5 and A ratio B ratio C was A is equals to 5 and A ratio B ratio C is 1 ratio 3 ratio 5. Find the value of A if B is equals to 9 at C constant. Now A is, what is A when B is equals to 9 and C is constant? भाई लैंग्वेज नहीं समझ आएगी क्या है इसमें, तो थोड़ा सा एक बार लेमन करके देखो। I don't know if my approach is correct or not. Let me do, if I get the solution then you go to know how a normal student work. But if we got incorrect then we have a solution, right solution, we can do the right solution and check it. Let's suppose A is equal to 5 दे रखा है, तो इस A की वैल्यू है 5, इस 3 की वैल्यू होगी 15, इसकी वैल्यू होगी 25।
यहाँ पे a की वैल्यू होगी k/b, k की वैल्यू होगी a, तो यहाँ से k की वैल्यू होगी 5 × 15 75। ये इतना आसान था, ये गलती है क्योंकि इसका तो यूज ही हो रहा था इसका। Why they have used this? There must be a use. हाँ 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 हाँ, उन्होंने देखा a is equal to 5। अरे a कांस्टेंट है, a is equal to 5, 5 की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे a कांस्टेंट है। मैंने गलत चीज यूज कर ली, ये मतलब फॉर्मूला नहीं यूज होगा। यहाँ पे a कांस्टेंट है भाई, a की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हो? a कांस्टेंट है तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, b is equal to kc, k is equal to b by c। b की वैल्यू है 15 और यहाँ पे देखा 25, 3/5, k की वैल्यू 3 आ गई। नाउ b is equal to c कांस्टेंट है, b 9 है, तो a जो है kb है, k/b, k की वैल्यू है 3/5, b की वैल्यू है 9, a will be 1/15। From my point of view, a की वैल्यू होगी 1/15। Is it correct or not? भाई जो अपने पहले कर रहे थे उसी से आंसर सही आ रहा था, 75/9 से, बट उसका लॉजिक गलत था, ये वाला अपना गलत है। हाउ वी हैव डन दिस इनकरेक्ट, उसकी मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि यार ये क्वेश्चन है जॉइंट वेरिएशन। मैं आई टोल्ड यू ना भाई, भूल जाते हैं कि जॉइंट वेरिएशन की नाम से कोई चीज होती है और उसका अपने को यूज भी करना आता है। सीधा सीधा दे रखे हैं यहाँ पे b is inversely proportional to a हो जाएगा, तो b will be directly proportional to c by a, so ab by c is equal to constant होगी, तो जिसकी वैल्यू हो सकती है a1 b1 c1 तो a2 b2 and c2, and here c2 is constant, the second one is c is constant ना, so a1 is constant, then a1 is 5 constant value है, b की वैल्यू हो जाएगी 15, c की वैल्यू हो जाएगी 25 from this ratio। Here a2 we have to find, b2 value is given 9, c2 value is not given, but they said कि c constant है, c constant है तो मतलब चेंज नहीं होगा कुछ भी, तो ये 25 आएगा, 25 को cancel, a2 will be 75/9, simple and easy, but sometimes we made mistake। और अगर इसको और ज्यादा आसानी से करना है, बिल्कुल ही आसान अल्टरनेट वेक्टर सॉल्यूशन, तो भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा करने की जरूरत है, कभी कभी एक्सेस में इंफॉर्मेशन दी होती है। मुझे लग रहा था ना कि भाई इसका क्यों यूज हो, ये भाई एक्सेस है इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। दे हैड सेड कि c कांस्टेंट है, b की वैल्यू 9 है, मतलब वैल्यू ऑफ a, c कांस्टेंट है, देन a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। We have already done this कि कैसे, अब a1 की वैल्यू 5 है, when a1 is 5 b1 is 15, a2 यहाँ पे b1 की b2 वैल्यू है, a2 is equals to 75/9। बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, ये इतना सही इसका सॉल्यूशन था। और लोग ने पता नहीं कितना इसके ऊपर दिमाग लगा दिया, ये कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65,
द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेट। यार ये क्वेश्चन ना मैं कहता हूँ जब जितने मैंने क्वेश्चन करे ना उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको मैं चैन पैन चेंज करता हूँ। ये दिस इज द very good question. Actually, this kind of question has come in the past, I guess. Category. So last year I have done these kind of the same type of question was exactly same. But it is like a past year question, I guess. So this is very good quality of question. 65 number. The cost of diamond varies directly as the square of its weight. Cost है diamond की वो directly है weight के square के। मतलब cost बढ़ेगी तो अगर weight बढ़ेगा तो cost भी बढ़ेगी। Once this diamond broke into 4 pieces with the weight in the ratio, अब weight का ratio बन गया है W1 ratio W2। ये 4 हिस्सों में diamond अपना गया टूटा और इसका ratio है 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4। When the piece was sold, the merchant got 70,000 rupees less। अभी अगर तो उसको पूरे को पूरे बेचता तो उससे कुछ पैसे बनते उसके। And he sold this broken pieces. उसने चारों broken piece he sold, and they found that he lost 70,000 rupees. So find the original price of diamond. The original price of diamond. What's the value of original price of diamond? So from here we can say C is equals to A into W square. Yeah. Let's suppose कि K W किसकी वैल्यू है इसको x ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर होगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 9 16 प्लस 5 25 30x। मतलब ये 4 हिस्सों में टूटा ना। लेट्स की सपोज करें कि इसको 1 ग्राम मान लेते हैं, प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10 ग्राम। मतलब 1 ग्राम का हिस्सा, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 4 ग्राम का हिस्सा है, तो टोटल है 10 ग्राम। मतलब जो टोटल शुरुआत में जो डायमंड था उसका वेट था 10 ग्राम। अगर वट 10 ग्राम वेट है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? K इंटू वेट कितना है 10 स्क्वायर 100 के जो उसकी कॉस्ट थी। नाउ जो अब ये वाला वेट है इसकी है 30 के। सो द लॉस इज ये हो गया C1, ये हो गया C2। C1 माइनस C2 का वैल्यू आ रही है ₹70,000 जो उसको लॉस हो रहा है। तो इससे K की वैल्यू आ रही है 70K। द K is equals to 1,000 rupees। If we find the value of K, we can find the value of C, original. This is original. Original is K into weight with the weight 100K, है ना? Weight is 10 gram. And square of 10, 10, 1 lakh. Yeah. Price of original diamond is 1 lakh, and he sold it in 30,000 rupees. और 1 लाख का डायमंड 30,000 में बिका है उसके ब्रेक होने के कारण। कैसे, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कॉस्ट है डायमंड की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। नाउ द डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। This ratio the ratio is 1:2:3:4। These 4 parts are in the ratio. Let's suppose कि अभी अपने को एग्जैक्ट वैल्यू इसमें है भी नहीं है। So let's suppose कि जो broken part है इस वैल्यू इज ग्राम इन ग्राम्स। जो एक है इसकी वैल्यू 1 ग्राम, इसकी वैल्यू 2 ग्राम, इसकी वैल्यू 3 ग्राम, इसकी वैल्यू 4 ग्राम। तो वेट तो कभी कम नहीं हुआ ना। मतलब मैं 10 किलो, मेरे पास 10 लीटर पानी है, मैंने उसको 4 बाल्टी में डाल दिया, उसको आधा आधा करके 2.5 लीटर, तो टोटल वेट तो 10 लीटर ही रहा ना। टोटल वेट तो चेंज नहीं हुआ, तो टोटल वेट इज स्टिल देयर।
10 ग्राम, उसी 10 ग्राम को 40 में बटाइए। 10 ग्राम अगर वेट है, टोटल वेट है ये, टोटल वेट है ये, टोटल वेट से जो कॉस्ट निकलेगी वो होगी, इसको अगर इससे करें तो ये आएगी 100 के। जो के है यहाँ पे कांस्टेंट है, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ के राइट नाउ, सो द कॉस्ट इज, ओरिजिनल कॉस्ट इज 100 के। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीस, कि इससे कितनी कॉस्ट अपने को आएगी। सो फ्रॉम 1 ग्राम इसकी जो सी, अगर बिल्कुल माइनर में जाना है तो C1 जो होगी, होगी 1 स्क्वायर इनटू के, which is equals to C1 is equals to K. Here is C2 will be 2 square into K, we get 4K. By this we can get 6K, 9K and 16K. And when we add these cost, we get the 30K as the total cost. C3 आएगी, C4 आएगी, and C total जो आएगा C1 plus C2 plus C3 plus C4, we get 30K as the value. मतलब 100 के इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, टूटने के कारण उसकी कॉस्ट होगी 30K, इसका डिफरेंस है 70K, एंड द वैल्यू इज आल्सो गिवन की 70,000 रुपीस ही गॉट इन लॉस, द 70K is equal to 70,000, where we can find the value of K. K is 1,000. By putting the value of K, we get the original cost is 1 lakh rupees. This is very good question, and most of the time we see these kind of question in our CAT paper or in the mocks, I guess. और यार आपको गए थक अपने बोलने के बची नहीं है हिम्मत, जिम वगैरह करते आए हैं भाई, तो थके पड़े हैं, दिमाग से थक, बस सो जाएंगे। इसके बाद LRDA का भी एक सेशन करना है, सो अगर 65 क्वेश्चन enough for today. We have done 10 questions, 10 more waiting for question. I want to increase my number of questions, but क्या करें यार, my timetable is not getting accurately, मतलब I can say सही नहीं हो रहा यार, मिस्टेक, और मैंने कल के LRDA सेट में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। Why I change my setup is because मेरा मेमोरी खत्म हो गई थी, तो और वीडियो is automatically got done, stop. So the last question I have, as I'm doing, I couldn't able to get the whole solution in class, so I have to do that question again in this class. So I'm trying कि मैं वो एक क्वेश्चन ही कराऊंगा आज, actually good. So this is for today. Let's end this session. And आज लाइव में 0 है व्यूज, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे 0 ही रखते हैं, so don't worry. It's our revision series, it's our transformation series. It is a journey from nothing to something, and the something is the getting the admission letter from the top islands, and we will achieve this. So this is the only target I have in my right now in my mind. Plus there is a small target, getting into good shape. Right now I'm doing great. Right now, yeah, gym वगैरह regular हो रही है, डाइट पे भी थोड़ा कंट्रोल है, so getting into good shape and getting into the good mean top B school, not in a good B school. Getting to top B school is my target, sole target is getting into big school, big B school. पता नहीं होगा नहीं होगा, I don't know, maybe इसको कहाँ पे जाने, the only thing we have in our hand is our मेहनत, so maybe कहाँ पे जाओ, one day we will get what we have done. So this is end of our today's live stream. Good night, guys. We'll meet tomorrow. Thank you. Thank you, man.